नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ उन तमाम दर्शकों का और अपने लर्नर्स का ये इस आरएसटी द्वारा संचालित नियमित रूप से संचालित होने वाली रेगुलर लाइव टेली कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम में जो हमेशा इसी हर हफ्ता इसी समय पर 3 से 4 बजे हर मंगलवार को ज्ञान दर्शन चैनल पर प्रसारित होता है। और आज मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर श्वेता सिंह, रीजनल सर्विसेज डिवीज़न से असिस्टेंट डायरेक्टर। और इसी तरह से हमारे साथ आज है डॉक्टर अहमद अली जौहर, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटी असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू लैंग्वेज का। स्वागत करती हूँ डॉक्टर अहमद अली जी का। तो आज हम उर्दू भाषा में के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इग्नू में उर्दू भाषा पे अध्ययन तथा अध्यापन कराया जाता है। ये प्रोग्राम हम सर्टिफिकेट लेवल से लेकर डिप्लोमा लेवल से लेकर बैचलर लेवल से लेकर हाल ही में हमने मास्टर लेवल पे भी ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इसी जुलाई सत्र से। और इस विषय में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे डॉक्टर अहमद अली जौहर साहब से। और इससे पहले मैं उन तमाम दर्शकों को कुछ इम्पोर्टेंट बात, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे दाखिला संबंधित जो जानकारी है, जो एडमिशन से रिलेटेड जानकारी है, जो जुलाई सत्र 2022 के लिए अभी भी ये नामांकन यानी इनरोलमेंट करने की प्रक्रिया जारी है, जिसका डेट अभी बढ़कर 27 अक्टूबर 2022 तक ये जो डेट एक्सटेंड किया गया है। पर इसमें एक चीज़ हम आप लोग सबको ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो बढ़ा हुआ डेट जो है सर्टिफिकेट लेवल और सेमेस्टर बेस्ड लेवल के प्रोग्राम के लिए ये अभी ये ख़त्म हो चुका है। और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स के लिए अभी ये डेट अभी भी बढ़ा हुआ है। तो हम उन तमाम दर्शकों को मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जो अभी भी इग्नू से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ समय बाकी है। तो इसी तरह से हम टाइम टू टाइम इसी प्रोग्राम में और भी अहम जानकारी आपको प्रदान करते रहेंगे। बट अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर अहमद अली जौहर साहब से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि उर्दू भाषा, जैसे हम थोड़ा जानते हैं बड़ा अदब से बोला जाता है, नाम लिया जाता है इस भाषा का। उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा बोलते ही हमें एक जहन में एक बात ये होती है कि ये बहुत तहजीब और तमीज़ की लैंग्वेज है, बहुत भाषा है। तो मैं इस भाषा की थोड़ी सी बैकग्राउंड और आज के समय में भी इसकी प्रासंगिकता के पर डॉक्टर साहब को मैं प्रकाश डालने के लिए अनुरोध करूंगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू ज़बान हमारी तहजीबी विरासत का अमीन है, जो रियल में गंगा जमनी तहजीब कही जाती है। उसकी सच्ची झलक, उसका रिफ्लेक्शन उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर में देखने को मिलता है। और ये ज़बान यहीं पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि ये मिली जुली ज़बान है। तमाम ज़बानों से रस निचोड़ कर, अर्क निचोड़ कर तब ये ज़बान जवान हुई और फली फूली। इसमें आपको संस्कृत के भी अल्फाज मिल जाएंगे, हिंदी के भी अल्फाज मिलेंगे, और हिंदुस्तान की जितनी भी इलाकाई भाषाएं हैं उन तमाम के असरात उर्दू ज़बान पर देखने को मिलेंगी। उर्दू ज़बान की सबसे बड़ी खूबी ये है, और इसकी तरक्की करने की वजह भी है, कि इसने एडप्टेबल रवैया अपनाया, यानी अपने दामन में अल्फाज को जगह देने का। अंग्रेज़ी के अल्फाज को इतनी खूबसूरती से उर्दू ने समोया कि जब आप उर्दू लिटरेचर का मुताला करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं। इसी तरह संस्कृत के अल्फाज का जब आप मुताला करेंगे तो उर्दू ने उसको इस तरह
इस्तेमाल किया और इस तरह अपने दामन में सजा सवार कर जगह दी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये संस्कृत के अल्फाज हैं, ये हिंदी के हैं। इसी तरह तमाम ज़बानों से जो उसकी इत्र है, उसकी जो खुशबू है, उससे निचोड़ कर उर्दू ने अपनी खुशबू को बढ़ाई। यही वजह है कि उर्दू ज़बान हर हिंदुस्तानी को अपनी ज़बान, मादरी ज़बान जैसी लगती है। और इस ज़बान में जो कशिश है, जो अट्रैक्शन है, जो खिंचाव है, फिल्मी गाने जो मकबूल हुए, वो इसकी वजह यही है कि हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों की रूह, उसकी खुशबू उर्दू में पाई जाती है। उर्दू ज़बान में आपको हिंदुस्तान की अजीम शख्सियात, गुरु नानक, चिश्ती, राम और सीता जी, इन तमाम लोगों पर जो पोएट्री कही गई है, जो खूबसूरत नज़में कही गई हैं, वो उर्दू ज़बान की ताकत है, उर्दू ज़बान का पावर है। नज़ीर अकबर आबादी का आपने नाम सुना होगा, अवामी शायर की हैसियत से मशहूर थे। उनकी ज़बान आज भी, आप बाज़ार चले जाइए, गली कूचों में चले जाइए, आप हिंदुस्तान के जिस खित्ते में चले जाइए, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पढ़िए, वह ज़बान आपको वहाँ बोलती हुई मिलेगी, वह ज़बान आपको सुनने को मिलेगी। नज़ीर अकबर आबादी ने इतनी खूबसूरत नज़में होली पर, दिवाली पर कही हैं कि मैं समझता हूँ कि हिंदी और संस्कृत के अलावा दूसरी इलाकाई भाषाओं में उतनी खूबसूरत नज़में शायद कही गई हूँ। इसी तरह पंडित बिरज नारायण चकबस्त उर्दू के अजीम कौमी शायर की हैसियत से मशहूर हैं। उनकी मशहूर नज़्म है नौजवानों से खिताब। आज हम जिस इत्तिहाद की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं और भारतीयता की बात करते हैं, इन तमाम की जड़ें, मजबूत जड़ें हमें पंडित बिरज नारायण चकबस्त, तिलुक चंद महरूम, मुंशी प्रेमचंद ने फराहम की है। और इन लोगों की कोशिशों से जो उर्दू लिटरेचर जो फ़रोग पाया, जो तरक्की की, तो उसको पढ़ते हुए हमें उर्दू लिटरेचर में हिंदुस्तानियत की प्योर खुशबू महसूस होती है। पूरी हिंदुस्तानियत और भारतीयता को हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में। उर्दू फिल्मी गाने आप रात दिन सुनते हैं, ये उर्दू अल्फाज, उर्दू गानों ही की ताकत है कि आज भी ज़्यादातर लोग क्लासिकी गाने सुनने पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है? शाहिर लुधियानवी, मिर्ज़ा गालिब, मजरूह सुल्तानपुरी, इन तमाम लोगों ने अपने खूबसूरत कलाम से, फिल्मी बोलों से, फिल्मी गीतों से जो उर्दू अदब को सजाया, संवारा और फिल्मी दुनिया को बुलंदी पर पहुंचाया, फिल्मी गानों को बुलंदी पर पहुंचाया, ये उर्दू अदब का बहुत बड़ा कमाल है। उर्दू अदब की ताकत दरअसल हिंदुस्तान की ताकत है। हिंदुस्तान के तमाम अनासिर, तहजीबी अनासिर, समाजी अनासिर और सियासी अनासिर भी उर्दू अदब में मौजूद है। आप तारीख़ की किताबों में 1857 के वाक़ये को डेट वाइज वाक़यात के बारे में मालूम कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त की जो फ़िज़ा थी, उस वक्त का जो माहौल था, वो आपको
अगर आपको महसूस करना हो, रियल में अगर अपनी आंखों के सामने उस माहौल को देखना हो, मिर्ज़ा गालिब के खुतूत को पढ़ लीजिए। ऐसा लगेगा कि 1857 का वाकया हमारी आंखों के सामने नमूदार है। इसी तरह 1947 में जो देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, और इसमें बहुत सी जानें भी गई, नुकसान हुआ, इस ट्रेजेडी को, इस अलमिये को अगर आपको देखना हो, महसूस करना हो, उर्दू नॉवेल का मुताला कीजिए, उर्दू अफसाने का मुताला कीजिए। कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना है पेशावर एक्सप्रेस। एक मुख्तसर अफसाने में इस वाक़ये की जो झलक मिलती है और वो जो दर्द और कर्ब की अक्कासी मिलती है, वो काबिल तहसीन है। तो उर्दू अदब में, जब से उर्दू अदब पैदा हुई, फिर पली बढ़ी, तब से लेकर अब तक के हिंदुस्तान के तमाम वाक़यात को उसने तख़य्युलाती अंदाज में, महसूसाती अंदाज में अपने अदब में महफूज कर दिया है। और हिंदुस्तान की 17वीं सदी चली गई, 18वीं सदी चली गई, अब हम 19वीं सदी भी गुजर गई, अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लेकिन उन सदियों को अगर आपको महसूस करना हो तो उर्दू अदब में वो पूरी तरह महफूज है। आपको पता होगा कि एक अंग्रेज़ों के ज़माने में उर्दू सरकारी ज़बान भी रही, उर्दू हुकूमत की भी ज़बान रही, सूफिया की भी ज़बान रही, संतों और भक्तों की ज़बान रही, बाज़ारों की ज़बान रही, उर्दू गली कूचों की ज़बान रही। यही वजह है कि उर्दू का दायरा सिर्फ महदूद दायरा नहीं है, इसके दायरे में पूरा हिंदुस्तान आता है। उर्दू ज़बान की मकबूलियत की वजह से, इसके एक्सेसिबल की वजह से, रसाई की वजह से इसको लिंग्वा फ्रेंका की हैसियत हासिल थी। यानी जिस तरह आज पूरी दुनिया को जोड़ने वाली ज़बान अंग्रेज़ी कही जाती है, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़बान उर्दू थी। और ये उर्दू फ़ौजों की ज़बान रही है। और उर्दू के माना ही लश्कर आते हैं कि लश्करों के ज़रिए, जाहिर सी बात है कि लश्कर में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों और मुख्तलिफ़ हिस्सों के लोग होते हैं, उसमें आसाम के लोग भी होते हैं, पंजाब के भी लोग होते हैं। तो उसी तरह उस ज़माने में मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो लोग थे, तो उन लोगों की जो मकामी और इलाकाई भाषा थी, उससे जब बात नहीं बन रही थी, जब कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, इस कम्युनिकेशन गैप को पुर करने में, उस खला को पुर करने में उर्दू ज़बान ने एक अहम रोल अदा किया। आपको पता होगा कि उर्दू ज़बान हमारे तहरीक आज़ादी की ज़बान रही है। और अजीम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनका जो खूबसूरत स्लोगान और ख़ूबसूरत नगमे, इनकलाब जिंदाबाद, और इसी तरह और भी दीगर खूबसूरत जो उस वक्त के तराने हैं, वो सब उर्दू में हैं। और कहा जाता है कि तहरीक आज़ादी की में सबसे अहम रोल अदा करने वाली और अहम किरदार अदा करने वाली जो ज़बान रही, वो उर्दू रही। मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ज़फ़र अली ख़ान, इन तमाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन तमाम लोगों ने अपने अखबारात के ज़रिए तहरीक आज़ादी को ताकत बख्शी, लोगों तक अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने ख़यालात को उर्दू ज़बान के ज़रिए, उर्दू अखबारात के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया।
यही वजह है कि मौलाना हज़रत मोहानी भी कई मरतबा जेल गए, मोहम्मद अली जौहर भी जेल गए, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी कई मरतबा जेल गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे आज़ाद हिंद के, आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और उन्होंने जो उर्दू लिटरेचर को दिया है, चाहे वह सहाफ़त के ज़रिए हो, चाहे वो अदब के ज़रिए हो, वो गिरा कदर सरमाया है। और तहरीक आज़ादी को बढ़ावा देने में पंडित बिरज नारायण जगबस्त, तिलुक चंद महरूम, आनंद नारायण मुल्ला, मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, उसका पहला जो अफसाना है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उन्होंने किस बात को करार दिया है कि मुल्क को आज़ाद कराने में शहीद होने वाले का जो सबसे यानी पहला कतरा जो खून का है, उसको दुनिया का सबसे अनमोल रतन करार दिया है। प्रेमचंद ने कितना खूबसूरत मैसेज दिया है, और कितनी खूबसूरत उन्होंने तरगीब दी है, मोटिवेट किया है लोगों को। तो दोस्तों और सामीन, उर्दू अदब की ये खूबियाँ आपने सुनी, और जहाँ तक उर्दू अदब में करियर बनाने का सवाल है, इस पे अभी हम आएंगे। जी, मैं यहीं पर आपको अभी रोकना चाहूँगी और आपसे एक और सवाल मुझे पूछने का मन कर रहा है। जिस तरह से आप अपनी चर्चा के दौरान उर्दू लफ्ज़ों का प्रयोग कर रहे थे, और जैसा हम सुन रहे थे, तो हमें बहुत एक रूहानी फील, एकदम रोमांटिक फीलिंग जैसा हो गया। और जिस तरह से आपने बताया कि उर्दू भाषा का योगदान हमारे भारत के इतिहास को जानने समझने के लिए, और आज जो फिल्मी दुनिया, जो हमारा भारत के जो एक बहुत बड़ा मशहूर चीज़ है, मतलब एकदम फेमस, तो उसमें भी हमारा उर्दू ज़बान का बहुत योगदान है। जिस तरह से आपने कुछ मशहूर शायरों का नाम लिया, जैसे लुधियानी साहब और मिर्ज़ा गालिब और नजरुन सुल्तानपुरी, तो उसी तरह से एक हमें पुराने सदाबहार युग का याद आया मुझे। अभी तक भी उन्होंने लिखे हुए कलाम, उन सब के द्वारा लिखे हुए कलाम आज तक भी सदाबहार गानों के रूप में हमारे कानों में गूंजता रहता है, और बहुत ही अच्छा लगता है वाकई। और अब मैं सबसे आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम करियर की बात करने से पहले एक और छोटा सवाल है। जैसे हम मतलब लोगों के मन में ये है कि उर्दू भाषा मेनली जो है भारत के उत्तरी भारत में ही सुना या समझा जाता है, बट कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है हमारे दक्षिणी भारत में भी उर्दू भाषा का जो समझ रखने वाले लोग काफ़ी हैं। तो अब उत्तरी और दक्षिणी भारत के हमारे जो एकीकरण, मतलब उसको एक राष्ट्र के रूप में समझने के लिए भी उर्दू भाषा का क्या उसमें भी योगदान है? जी, मैं इस सवाल का जवाब इग्नू ही के ज़रिए मैं आपको देना चाहूँगा कि जनवरी 2022 में हमने बीए ऑनर्स उर्दू प्रोग्राम शुरू किया। हमें उम्मीद नहीं थी कि केरल से उतने बच्चे एडमिशन लेंगे, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में 40 से 50 बच्चों ने केरल से एडमिशन लिया। ये इस बात की दलील है कि साउथ में भी उर्दू काफ़ी मकबूल हो रही है, काफ़ी परवान चढ़ रही है। और साउथ ही क्या, ये त्रिपुरा से अभी कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर मैंने बीए ऑनर्स उर्दू में एडमिशन लिया है। तो इस तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, चाहे वो आसाम में हूँ, त्रिपुरा में हूँ, गुजरात में हूँ, केरल में हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कश्मीर की तो खैर उर्दू ज़बान वहाँ रही है, लेकिन ये साउथ इंडिया की जो बात आती है, तो मैं
आपकी इत्तला के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि साउथ इंडिया के सारे स्टेट से, सारी रियासतों से, तकरीबन एक एक रियासत से, एक एक स्टेट से 4-4, 5-5 उर्दू अखबारात निकलते हैं। नंबर 2, 4-4, 5-5 उर्दू मैगजीन्स निकलती हैं। और इन अखबारात और मैगजीन के अलावा उर्दू मीडियम स्कूल्स भी हैं कर्नाटक में, आंध्रा में भी, और तमिलनाडु में भी, और केरल में भी। और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में भी उर्दू की डिमांड बढ़ रही है कि सर हम उर्दू को पढ़ेंगे, हम उर्दू को सीखेंगे, हम उर्दू को जानेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि और डिप्लोमा में और सर्टिफिकेट में कई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी कॉल किया कि सर हमने एडमिशन लिया है इग्नू में डिप्लोमा करने के लिए, सर्टिफिकेट करने के लिए। वो इस वजह से कि वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट करके एमबीबीएस किए हुए हैं, वो मिडिल ईस्ट में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं। और इसी तरह और भी कई कंट्रीज़ में जहाँ उर्दू की डिमांड है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको आज के ज़माने में अंग्रेज़ी नहीं आती है तो कोई झिझक की बात नहीं है, हिचकिचाने की बात नहीं है, और दिक्कत की बात नहीं है। उर्दू मार्केट की ज़बान आलमी पैमाने पर बन रही है। जी, अब जब आपने मार्केट की बात कर ही ली है तो हम इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अब करियर पे भी बात करना चाहेंगे। विस्तृत रूप से आप डॉक्टर अहमद जी बता दीजिए हमारे तमाम दर्शकों को, और जो अभी हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया कि अभी दाखिला लेने के लिए कुछ समय बढ़ा है, तो हमारे स्टूडेंट कम से कम बीए और एमए लेवल में तो स्टूडेंट अभी एडमिशन ले सकते हैं। तो करियर की दृष्टि से भी उर्दू भाषा का जो महत्व, आप उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। जी, उर्दू भाषा से सर्टिफिकेट करके आप सर्टिफिकेट लेवल के जो जॉब्स हैं, और यही नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटियों में उर्दू कंपलसरी है। वहाँ मुलाजमत करने के लिए उर्दू जानना ज़रूरी है। अब इस जानने को शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपसे डिग्री मांगी जाती है कि कम से कम उर्दू लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ हो या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ हो। तो इस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा की बुनियाद पर आप उन यूनिवर्सिटियों में जहाँ उर्दू कंपलसरी है जानना और लिखना, वहाँ मुलाजमत मिलती है। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं, और भी एमबीए किए हुए हैं, तो वो मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, या फिर कुछ कंट्रीज़ जहाँ उर्दू बोली जा रही है, कनाडा वगैरह में, और मलेशिया में, इंडोनेशिया में, तो वहाँ भी आपको ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, ये दोनों प्रोग्राम आपके जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है, मुआविन साबित होता है। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और उसके बाद हमारे यहाँ बीए जनरल प्रोग्राम चल रहा था, बीए डिग्री प्रोग्राम, और चल रहा है, और अभी बीए ऑनर्स उर्दू प्रोग्राम शुरू हुआ है। और 2021 जुलाई में एमए प्रोग्राम शुरू हुआ, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन लिया। तो मैं पहले ये बताता चलूँ कि बीए करके आप क्या क्या कर सकते हैं। बीए जनरल करके या बीए डिग्री करके, बीए ऑनर्स करके आप एजुकेशन में जाने के लिए बीएड कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो पहले से टीजीटी हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, या किसी स्कूल में टीचर हैं बंगाल में, बंगाल के बहुत से लोगों ने बीए में एडमिशन लिया है। तो क्यों? उनको प्रमोशन चाहिए,
इंटर की बुनियाद पर नौकरी मिल गई थी, तो वो बीए अगर हो जाएगा तो उनको प्रमोशन मिलेगा, ये बेनिफिट है। इसके अलावा अभी भी हिंदुस्तानी कोर्ट कचहरी में जो पुराने डॉक्यूमेंट्स, जो पुराने दस्तावेज़ हैं, जो जिस ज़माने में, क्योंकि पहले फ़ारसी ज़बान चलती थी, फिर फ़ारसी के बाद कुछ दिनों उर्दू ज़बान चली, फिर अंग्रेज़ी ज़बान जो आज तक राइज है, अंग्रेज़ी और हिंदी। तो पुराने डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए अभी भी कोर्ट और कचहरी में उर्दू दाँ की ज़रूरत होती, उर्दू जानने वाले की ज़रूरत होती। बीए जनरल और बीए ऑनर्स करके, इवन डिप्लोमा भी करके आप वहाँ मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो नेशनल म्यूज़ियम है, आर्काइव्स है, वहाँ भी जो 17वीं और 18वीं सदी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ हैं, उनको भी, उनमें भी काम करने के लिए उर्दू दाँ की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा तर्जुमे में, कि उन डॉक्यूमेंट्स को का तर्जुमा करके अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके देना है, या उर्दू में देना है, या हिंदी में देना है, तो इन तर्जुमे के ज़रिए मुलाजमत के मौक़े मिलते हैं। जो हमारे आसार क़दीमा है, जो आसार क़दीमा है, वक्फ़ बोर्ड है, तो वक्फ़ बोर्ड में भी जो पुरानी अमलाक की फ़ाइलें, जो पुरानी जायदाद की फ़ाइलें, वो सब भी फ़ारसी और उर्दू में, वहाँ भी उर्दू दाँ की सख्त ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी उर्दू दाँ को मुलाजमत मिलती है। तो आप के लिए मुख्तलिफ़ सतह पे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में और मुख्तलिफ़ महकमों में मुलाजमत की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस जानकारी को हम मज़ीद और तफसील से बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान है मेरे प्यारे वतन, ने मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस ज़ुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने
कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। नमस्कार, एक बार फिर से हम उपस्थित हो गए हैं छोटा सा ब्रेक के बाद, और आज आप सबको विदित ही है कि हम चर्चा कर रहे उर्दू भाषा पर। और जैसे कि मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर आरएसटी से, और हमारे साथ है डॉक्टर अहमद अली जोहर, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। और हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम दर्शकों को अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ फ़ोन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, और हमें कॉल करने के लिए जो हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप सबका कॉल का भी, और उर्दू भाषा से संबंधित कोई भी जानकारी या इग्नू से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर से डॉक्टर अहमद जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हम इसमें अभी करियर के ही विषय में बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हम दूसरी सवाल पे आएंगे। जी, अभी इससे पहले उर्दू में करियर की बात हो रही थी कि उर्दू प्रोग्राम्स के ज़रिए आप करियर कैसे बना सकते हैं। उर्दू अभी 2-3 रोज़ पहले का वाक़या है कि महाराष्ट्र से मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, तो वहाँ 2 बच्चियों ने सिविल सर्विसेज, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम उर्दू मीडियम यानी उर्दू ज़बान में लिखकर क्वालिफ़ाई किया। तो अभी भी हमारे हिंदुस्तानी निज़ाम में
हिंदुस्तानी सिस्टम में यह मौका फराहम है आपको। आप बीए डिग्री प्रोग्राम करके, बीए ऑनर्स करके आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के ऑफिसर बन सकते हैं। आप यूपीएससी में उर्दू पेपर रख सकते हैं। उर्दू मीडियम में लिखने की भी सुविधा है, की आसानियाँ हैं। और कई लोगों ने उर्दू मीडियम से पढ़ के, उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़कर आला से आला ऑफिसर बने। यानी सिर्फ आप टीचर ही तक महदूद नहीं है, आप प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के टीचर तो बन ही जाएंगे, ऑफिसर भी बन सकते हैं आप। उसके बाद जो एमए का प्रोग्राम है, आपको पता है कि एमए का प्रोग्राम ये हायर एजुकेशन में आता है कि इसके बाद आप डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एमए प्रोग्राम करने के बाद आप यूजीसी का एग्ज़ाम देकर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फेलोशिप देती है रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए। इसके अलावा भी पीएचडी करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के फेलोशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फराहम करती है। हमारे यहाँ पीएचडी का भी प्रोग्राम है जो जनवरी 2022 में शुरू हुआ और 13 बच्चे इनरोल हैं हमारे यहाँ। और वो कोर्स वर्क, 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क पूरा करने के बाद फिर वो थीसिस लिखेंगे और 3 साल, कम से कम 3 साल में थीसिस जमा करनी होती है और मैक्सिमम 5 इयर्स। थीसिस जमा करने के बाद उनको डॉक्टरेट की उपाधि, डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। उसके बाद वो कहीं भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। तो एमए और पीएचडी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये करियर से ही रिलेटेड कि अभी आपने अध्यापन क्षेत्र में और बाकी सरकारी कार्यालय में भी और कोर्ट कचहरी में भी उर्दू भाषा का ज्ञान होने से करियर बना सकते, ये तो बात बताई, बट इसी तरह से रेडियो में भी और इंटरटेनमेंट सेक्टर में भी, जैसे और मैंने अभी हमेशा सुनती हूँ एफएम गोल्ड में 9 बजे उर्दू भाषा में समाचार प्रसारित होता है। तो उसी तरह से और भी टाइमिंग होगा तो इस तरह से न्यूज़ रीडर के रूप में भी वो लोग करियर बना सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात की तरफ आपने तवज्जो दिलाई। मैं अभी आगे बोलना चाह ही रहा था, आपने तवज्जो दिलाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू जर्नलिज़म, उर्दू मीडिया में बेहतरीन मुलाजमत के जॉब के मौके हैं। आपने बड़े बड़े पत्रकार का नाम सुना होगा, अजीज़ बरनी, इसी तरह और भी दीगर लोग। राष्ट्रीय सहारा पेपर के एडिटर थे। इसी तरह अभी रोज़नामा इनकलाब निकलता है। तो शुमाल से जुनूब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरब से पश्चिम तक 100 से ज़ायद उर्दू अखबारात निकलते हैं, बल्कि 200-250 तक उर्दू अखबारात निकलते। सिर्फ दिल्ली से 25-26 उर्दू अखबारात निकलते हैं। तो उर्दू जर्नलिज़म में बेहतरीन मौके हैं। आप एडिटर बनेंगे, आप न्यूज़ रीडर बनेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उसमें भी कई लोग हैं, उसमें आपको एंकर बनने का, न्यूज़ रीडर बनने का बेहतरीन मौका आपको फराहम होगा। अभी ऑल इंडिया रेडियो है, उर्दू सर्विस है, उर्दू मजलिस है, इस तरह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ महकमे हैं जहाँ स्क्रिप्ट राइटर की भी ज़रूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट राइटिंग के ज़रिए आप करियर बनाएंगे, न्यूज़ रीडिंग के ज़रिए आप करियर बनाएंगे और एंकरिंग के ज़रिए आप करियर बनाएंगे। तो रेडियो में, टेलीविज़न में भी उर्दू
डिग्री उर्दू प्रोग्राम के ज़रिए रोज़गार के मौक़े हासिल करने के बेहतरीन मौक़े हैं। और ऑल इंडिया रेडियो में या उर्दू सर्विस में ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप तर्जुमे के ज़रिए, जाहिर सी बात है कि कोई ख़बर नेपाल से आ रही है या बांग्लादेश से आ रही है बांग्ला ज़बान में, या फिर पाकिस्तान से आ रही है उर्दू में, तो उसका तर्जुमा आप इंग्लिश में करेंगे तो उस तर्जुमे को फिर इंग्लिश वाले प्रस्तुत करेंगे और फिर आप उसको अपने हिसाब से उर्दू में भी प्रस्तुत करेंगे। तो रेडियो और टेलीविज़न में एंकरिंग, न्यूज़ रीडिंग और ट्रांसलेशन, इन तीनों में रोज़गार के बेहतरीन मौक़े हैं। उसके अलावा प्रिंट मीडिया में आपको एडिटर बनने का, न्यूज़ रीडर बनने का, प्रूफ रीडर बनने का बेहतरीन मौका है। तो रेडियो, टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया, इन तीनों में अभी भी उर्दू ज़बान व अदब से डिग्री हासिल करने वालों के लिए सुनहरा मौका है, बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम ने अपने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा कि इग्नू में अध्ययन तथा अध्यापन कराया जाता है ये उर्दू भाषा में। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उर्दू भाषा में अभी तक इग्नू में किस किस लेवल पे कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, ऑन ऑफर है, जिससे कि हमारे दर्शक अभी भी बचे खुचे टाइम का वो लोग सदुपयोग कर सकते हैं। और साथ ही ये भी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे उर्दू भाषा का अध्ययन अध्यापन हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के अलावा और भी कई विश्वविद्यालय में होते होंगे, तो हमारा पाठ्यक्रम किस तरह से हमारे दर्शकों को और अपने लर्नर्स का मतलब आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी बीए डिग्री, बीए जनरल और बीए ऑनर्स उर्दू और एमए, इन तीनों में दाखला लेने का मौका है कि जो डेट आगे बढ़ाई गई है, तो इन तीनों प्रोग्राम्स में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का है, इस वजह से उसमें अब फिर नेक्स्ट सेशन यानी जनवरी में एडमिशन आप लेंगे। इसी तरह डिप्लोमा भी 1 साल का है, तो इसमें भी एडमिशन बंद है, क्लोज है, आप जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम 16 क्रेडिट का है और इसके ज़रिए आप उर्दू स्क्रिप्ट, उर्दू लिपि यानी उर्दू को लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज। कोई भी आदमी जिसका बैकग्राउंड उर्दू नहीं है, जो उर्दू लिख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, वो इस प्रोग्राम के ज़रिए, चाहे वो हिंदी बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं या बांग्ला बैकग्राउंड से है, आसामी बैकग्राउंड से हैं, वो उर्दू सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज प्रोग्राम के ज़रिए उर्दू को लिखना, उर्दू को बोलना, उर्दू को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। डिप्लोमा इन उर्दू प्रोग्राम 24 क्रेडिट का है, ये 1 ईयर कोर्स है और मैक्सिमम 3 इयर्स में इसको पूरा कर सकते हैं। डिप्लोमा करके आप, ये उन लोगों के लिए है जो उर्दू लिखना जानते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट से आगे का प्रोग्राम है। तो डिप्लोमा करके वो उर्दू ज़बान और अदब के मुतालिक कि उर्दू की हिस्ट्री क्या है, उसकी तारीख़ क्या है और उर्दू लिटरेचर क्या है और उसमें क्या क्या मशहूर, कौन कौन सी मशहूर शेरी असनाफ़ हैं, नसरी असनाफ़ हैं, जो पोएटिक जेनरीज हैं या प्रोज जेनरीज हैं, उनके बारे में, यानी एक होल उर्दू ज़बान और अदब के बारे में जानने के लिए डिप्लोमा इन उर्दू लैंग्वेज एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप कई जगह
कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान दिल्ली और एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, खुदाबख्श लाइब्रेरी, तो मुख्तलिफ़ महकमों में आपको मुलाजमत के मौक़े मिलेंगे। उसके बाद BA ऑनर्स उर्दू प्रोग्राम इस साल शुरू हुआ है। BA ऑनर्स उर्दू प्रोग्राम दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ का इख्तिसास ये है, खुसूसियत ये है कि हम करिकुलम को एक बेहतरीन तरीके से माहिरीन की मौजूदगी में तैयार करते हैं, ताकि हमारा करिकुलम ऐसा हो, हमारा निसाब ऐसा जामे और मरबूत तैयार हो कि इस कोर्स को करने के बाद तलबा और लर्नर्स किसी भी उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम में बैठें तो वो बआसानी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो प्रिंट सेल्फ लर्निंग मटेरियल तैयार किया जाता है, जो प्रिंट की शक्ल में हम तलबा को फराहम करते हैं, उसमें कई बातों का ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ रेगुलर क्लास नहीं होती है, लेकिन रेगुलर क्लास से बढ़कर हम इंफॉर्मेशन उनको फराहम करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट मटेरियल के ज़रिए हम कोर्स को इस तरह तैयार करते हैं कि उसको पढ़ते हुए तलबा को अपनी और अपने उस्ताद की मौजूदगी का एहसास हो क्लासरूम में। इसके लिए उस कोर्स को आसान लैंग्वेज में, मेयारी और आसान लैंग्वेज में लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, जो कंटेंट तलबा को पहुंचाया जा रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, इन्फॉर्मेशन को परसीव करने में कोई डाउट और कोई दुश्वारी ना हो। हमारा कोर्स मटेरियल रिसर्च बेस्ड भी होता है, यानी इन्फॉर्मेशन गलत ना हो। आसान ज़बान और मेयारी ज़बान में भी हमारा कोर्स होता है, ताकि इन्फॉर्मेशन उसको परसीव करने में, रिसीव करने में कोई दुश्वारी ना हो। इसीलिए एक कोर्स को मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में, फिर उस ब्लॉक्स में मुख्तलिफ़ इकाइयाँ, यूनिट्स बनाई जाती हैं। फिर उस यूनिट्स को दिलचस्प बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसका ढांचे को मुख्तलिफ़ हिस्सों में बांटते हैं। जैसे अगराद व मकासिद है, तमहीद है, फिर असल मौजू है, फिर आपने क्या सीखा, फिर अपना इम्तिहान खुद लीजिए, फिर सवालों के जवाबात, फिर फरहंग, फिर कुतुब बराए मुताला। तो अगराद व मकासिद को, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के बाद तलबा के अंदर, पढ़ने वाले के अंदर एक तजस्सुस बेदार होता है, और तमहीद, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद यह तजस्सुस को और बढ़ावा मिलता है। अरे इस कोर्स में ये बातें हैं, इसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जैसे ही वो कोर्स को पढ़ने के लिए जाता है तो आसान और मेयारी ज़बान में उसको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन यानी मुख्तसर 12 से 13 या 15 सफ़हात में उसको इतना इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाता है कि जो 4 और 5 लेक्चर में नहीं मिल सकता है। उसके बाद फिर यूनिट को पढ़ते हुए, इकाई को पढ़ते हुए उनको एक्टिव रखने के लिए वहाँ आपने क्या सीखा के तहत उनकी ज़हन नशी कराई जाती, उनको रिकॉल कराया जाता है कि आपने यूनिट में क्या पढ़ा। तो पढ़ी हुई चीज़ें फिर उसको याद हो जाती है। फिर उसके बाद अपना इम्तिहान खुद लीजिए के तहत मुख्तसर सवालात कायम किए जाते हैं। वो सवालात के ज़रिए उनको आजमाया जाता है कि आप आपने जो स्टडी की है, जो मुताला किया है, आप उसका जायज़ा लीजिए, इवेलुएट कीजिए अपने से। उसके बाद फिर सवालों के जवाबात, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखे जाते हैं, ताकि आंसर लिखने की मश्क भी वो कर सकें, ताकि वो फाइनल एग्ज़ाम में आंसर को लिख सकें। और फिर इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आंसर को कैसे लिखना है वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, खुद एतमादी के साथ वो जवाब लिखने की मश्क उनको कराया जाता है। और
हर इकाई में ग्लोसरी यानी फरहंग कायम किया जाता है कि इकाई में जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स दिए जाते हैं, ताकि क्लासरूम ना होते हुए भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर चला जाए। और फिर कुछ कुतुब यानी मुआविन कुतुब, कुछ किताबों के नाम दिए जाते हैं ताकि तलबा के अंदर जो तजस्सुस बेदार हुआ है, जो पढ़ने का शौक़ बेदार हुआ है, इस शौक़ को वो पूरा करने के लिए उन किताबों को भी देख सकें रेफरेंस के तौर पर, अपने इल्मी प्यास को बुझाने के लिए। तो ये हमारे कोर्स की, इग्नू के कोर्स की बुनियादी खुसूसियत है कि हम जामे और मरबूत कोर्स तैयार करते हैं और उस कोर्स के ज़रिए उनको इतना इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसे कंटेंट को डिलीवर करते हैं कि तलबा क्लासरूम में जाए बगैर बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव भी हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है और उस कोर्स का वो धीरे धीरे एक्सपर्ट भी हो जाता है स्टडी करते करते। और किसी भी बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा कोर्स बिल्कुल पूरी तरह मुआविन है। और एक ज़माने में इग्नू के कोर्स के ज़रिए लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे और आज भी करते हैं। और जो सोशल साइंसेस, हिस्ट्री है या सोशोलॉजी है या ज्योग्राफी है, दूसरी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स भी इन कोर्स के ज़रिए पढ़ के फिर बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं। जी, इसी तरह से अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ हमारा मास्टर लेवल प्रोग्राम, उसके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, और साथ में पीएचडी के विषय में भी, जो आपने अपने चर्चा के दौरान जिक्र भी किया था, बट उसको भी और विस्तृत रूप से बता दीजिए कि पीएचडी में दाखिला लेने के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना पड़ेगा। जी, हमारे यहाँ पीएचडी के लिए सीट एडवर्टाइज होती है 2 सेशन में, जून में और जनवरी में, जुलाई में और जनवरी में। हमारे यहाँ 2 बार एडमिशन लिया जाता है इग्नू में। तो जुलाई का सेशन अब कुछ ही दिनों में क्लोज होने वाला है। तो जुलाई के सेशन में हमारे यहाँ पीएचडी के लिए एडवर्टाइज़ नहीं हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एडमिशन हो चुके थे। लेकिन जो सीट्स अभी भी खाली हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से या कुछ लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, अभी भी हमारे यहाँ 4-5 सीटें खाली हैं उर्दू में। तो जनवरी 2023 में उर्दू पीएचडी की सीट एडवर्टाइज होगी, उसका इश्तिहार होगा और ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, फिर एनटीए के ज़रिए एग्ज़ाम होगा, फिर इंट्रेंस टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद 16 क्रेडिट का कोर्स वर्क करना होता है। उसके बाद फिर आप अपनी थीसिस लिखते हैं। ये है हमारे यहाँ पीएचडी करने की प्रक्रिया और प्रोसेस। तो जो लोग भी उर्दू से पीएचडी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो ज़रूर जनवरी 2023 इग्नू वेबसाइट पे विज़िट करें और अपनी पसंद के मुताबिक वो फॉर्म भरें और फिर एग्ज़ाम दें। और हमें उम्मीद है कि बहुत से लोग अभी भी ख्वाहिशमंद हैं और वो ज़रूर साइट विज़िट करके फॉर्म भरेंगे और दाखिला लेंगे। और एमए उर्दू प्रोग्राम हमारे यहाँ बहुत ही एक समझ लीजिए कि एक बेहतरीन प्रोग्राम के तौर पर माना गया है।
और जिसमें लर्नर्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे हिंदुस्तान से जिन लोगों को भी फंक्शनल यूनिवर्सिटीज़ में मौके नहीं मिले थे या टीचिंग में थे, उन तमाम लोगों ने फॉर्म भरा। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक सेशन में एडमिशन लिए एमए में, और बहुत दिलचस्पी से दिलजमी से लोग पढ़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एमए का जो कोर्स है हमारा, वो बहुत ही जामे कोर्स है, बहुत ही मजबूत कोर्स है। इतना बेहतरीन कोर्स तैयार हुआ है जिसकी वजह से लर्नर्स और स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए, उसको पढ़ने के लिए और यहाँ से डिग्री हासिल करने के लिए बेहद ख्वाहिशमंद है। तो हम उन तमाम का इस्तकबाल करते हैं। एमए प्रोग्राम का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा निसाब है, उसमें तमाम यानी उर्दू लिटरेचर, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उर्दू अफसाना, उर्दू की गैर अफसानवी नस्र, उर्दू तंज़ व मज़ाह, उर्दू नज़्म, ये तमाम असनाफ और तमाम जो है लिटरेचर का अहाता किया गया है। यहाँ से आप एमए उर्दू करने के बाद आपको कोई फिर कमी का एहसास बाकी नहीं बचेगा, यानी आप अपने आप को भरा पूरा महसूस करेंगे। यानी एमए करने के बाद आपको लगेगा कि मैंने एक जामे निसाब के ज़रिए एमए किया है। इसके लिए मेरी यह सलाह है, मेरी यह दरख्वास्त है स्टूडेंट से, लर्नर्स से, कि आप ज़रूर हमारे यहाँ आएँ, एडमिशन लें। हम आपका इस्तकबाल ही नहीं करेंगे बल्कि हर मुमकिन फैकल्टी होने के नाते हम आपकी मदद भी करते हैं असाइनमेंट जमा करवाने के सिलसिले में, और फिर काउंसलिंग के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, हर तरह की मदद के लिए 24 घंटे यहाँ की फैकल्टी तैयार रहती है और हर तरह की मदद फराहम की जाती है। हम तमाम जो है कि उर्दू प्रोग्राम से जुड़े लर्नर्स का, स्टूडेंट का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और हर तरह की उनकी मदद करने के लिए हम वक्त हम लोग तैयार हैं।
Namaskar. Welcome to this session on Postgraduate Certificate in Patent Practice. Today's topic is procedure for obtaining patent. We will see the different steps for obtaining patent in India. So let's see what are the different steps. The first and foremost step for obtaining a patent is filing of an application. So whenever you think your creation or your invention is worth patenting, you should first of all file an application. The patent application has to be filed by. Now, who are the people who can file an application for patent? We will see that there are six types of people who can file for a patent. That means you have to, first of all, you have to be an individual. You should not be you should be a individual who can file a patent. And the six categories of people who can file patent are: the first should be a true and first inventor, the second an assignee, a legal representative, joint applicants, foreign nationals, and any application which is made through an agency. So the people who can file for an patent are true and first inventor. When we say true and first inventor, we mean the person who has actually invented something is the true and the first inventor. Why first inventor? Normally we see that in pharmaceuticals or in pharma industries, what happens? Two people, they can have the same compound. They have invented the same compound. But the person who has first filed will get the patent. So that is why the term used is first inventor. True and first inventor. The first inventor means the person who has first filed the patent, an application for patent is known as the first inventor. The second, you can also assign it to a third person. If you have created something or you have an invention and you yourself don't want to file a patent or file an application for patent, you can assign it to a third person. So that person is known as the assignee. Also, a legal representative of a person can file a patent. So if you have created something, but even for those people who are no more in this world and they have invented something and their legal heir wants to file a patent, for them, a legal representative can file an application of patent. Or if somebody has declared somebody a legal representative, they can also file a patent for the invention. Also, joint applicants. Joint applicants means two or more people. If they come in combination or they come make a party and they want to file an application for patenting for the creation, they can also file a patent. Foreign nationals. Even foreign nationals, people who are living abroad in other countries and they think that they want to file a patent in this country, in any other country, where they think that their invention will have more relevance and more importance, can file a patent in that country. For example, if somebody is living in the United States and thinks that he has invented something which is of more use and importance in India, provided he or she has a residence in India or has an office in India, can file a patent in India. Even the application can be made through an agency. If somebody thinks that the application can be made through an agency to a third person, you can also declare somebody as an agent for you. A patent agent can file a patent for you. And then finally, but that doesn't mean that you are not yourself even if a patent has been filed through an agent, you will be the actual beneficiary of the patent. So you can also get it filed through an agency, through a patent agent. So now we've seen that who can file a patent: true and first inventor, assignee, legal representative, joint applicants, foreign nationals, and the application can also be made through an agency. Now let's see where to file. For filing an application of patent, the jurisdiction is also very important. We should know that there are 4 offices of patent in Delhi, Mumbai, Chennai, and Kolkata. So where should we file an application for a patent? If we have created something or if we have an invention, where should we go for filing an application for obtaining a patent in India? For that, we have to see that who are the people who can file in which offices. The appropriate office means the location of the patent office where the application should be filed. Applications which are filed in a
wrong jurisdiction are void ab initio. If you have filed an application in the wrong jurisdiction, your application will be null and void right from the beginning. The selection of an appropriate office must be made carefully. So it is based on the place of residence, domicile, or business of the applicant, or first mentioned applicant in the case of joint applicants, or place from where the invention actually originated, or place where the address for service in India. So it is for those people who are foreign nationals and they want to file a patent in India. For them, at least there should be an office in India where they want to, because if they want that their patent should be is relevant in India or having a lot of impetus in India, they should have an office for business in India. So now let's see the different offices, which offices entertains which jurisdiction or which type of application. As given by the applicant is situated if the applicant has no place of business or domicile in India. The appropriate office, once decided, cannot be changed during the processing of the application. So if you have decided that you want to file a patent in Kolkata and nobody else is entertaining, no other office is entertaining that, then you cannot change your place of filing of application also. Now, as I told you that there are 4 patent offices: Mumbai, Chennai, Delhi and Kolkata. In Mumbai, the states of Gujarat, the people who are staying, the residents of Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, the Union Territories of Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli. So if you are staying in all these places, in any of these states, you can file your patent in Mumbai. People who are staying in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh, the Union Territories of Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli, if they think that they should file a patent or they should file an application for patent, they should file it in Mumbai. So, because their patent office, the jurisdiction for the patent office is Mumbai. Now, if you are staying in the states of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal, National Capital Territory of Delhi, and the Union Territory of Chandigarh, if you're staying in all these places, in any of the states or any of the Union Territories, then you can file your application in Delhi. So Delhi is the appropriate place or appropriate office of jurisdiction for those people who are staying in these states. Again, for the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep, those people who are staying in any of these states, they can file their application in Chennai. So the office, the right jurisdiction of office or right jurisdiction offices for these people staying in these states is Chennai. So you have to file an application in these states only. And if you're not filing your application in these states, then what will happen? The jurisdiction is wrong. What will happen? You will be later you will not be allowed to file in any other jurisdiction. Your application will be considered as abandoned. So you have to be very careful while filing an application. Only one application you can file in the one jurisdiction. So the rest of India, if you are not filing in any of the states and any of the 4 offices, if you're not staying in any of the states which is already mentioned, then you can file your application in Kolkata, because the office of Kolkata is open for the rest of India. So anyone staying in any of the states other than those which are already mentioned can file an application in Kolkata. Now we have seen that who can file an application and where we should file an application. So the first and important, the very foremost thing which we should remember is that we should know first that who all can file an application, and you should be a natural person. This is very important. And second, that what is the territorial jurisdiction, in which jurisdiction you can file your application. That is also very important. That is the second important thing which you should know. Now finally we come to the prescribed fee, because when you're filing an application, you have to also submit a prescribed fee along with the application and the different forms which are mentioned in the Act. So applicants are divided into 2 categories for the purpose of calculation of the fee. Amount of the fee that is payable depends on whether the applicant is a natural person or person other than a natural person. So if you're a natural person, if you're an individual, the fee will be quite less. And if you're a company, or if you're a partnership firm, or if you're not a natural person, then the fee will be more for you. So in the later case is applicable to legal entities such as companies, R&D organizations, institutions, universities, societies, etc.
So there are two type of people who can file an application. The first is the natural person, and the second is a legal entity. He may not be a natural person, he may not be an individual, but he or she should be, it should be a company or a research and development organization, an university or a society. Even these, and a legal entity can file an application, go for filing an application for patent, other than a natural person. Now, fee charged in the later case, if you are a research and development organization, or if you are an institution, or if you are a company, the fee charged for these people is 4 times, for this legal entity is 4 times as compared to the fee which is charged to an individual. And the quantum of fee, it depends on number of priorities, the number of pages, and the number of claims. And details of the fee prescribed for filing an application, we will see what is the details of fee which is prescribed in the Act for filing an application. But when we talk about the number of priorities, number of pages, and number of claims, we have to be important that what is the claim which you're asking. For an individual, for example, if I'm an individual and I'm filing a patent, my claim will be just one simple line, what I'm claiming. But for a research and development organization, the claim can be a larger one, or can be more than one claims. So if the invention is of such a kind that he or she is claiming not only one thing, but he's claiming that these are having no side effects, or this is a machine which is better than the one which is already originating, or this is something which has got more usage, or it has got a number of people can use it. So your claim is more and more. So if you're claiming more, your fee will also be more. And if your claim is small, if your claim is a single thing, then your fee will also be less. So normally for an individual, the fee is less, and for an organization, for a research and development organization, or for an institution, or for a company, the charge is more, the fee is more. So that is very important when we are filing. Because for an individual, it is also difficult to file an application. So it is always kept in mind that seeing that the fees for individual people will be less. Now, coming to the procedure of filing application. Now, when we are filing an application, there are two things which we have to remember. The specification. There are two types of specification. One is the provisional specification, and the second is the complete specification. So if the complete specification has not filed at the time of first filing, if you think that your specification is not complete, there is something missing, then what you can do is you can go for a provisional specification. So if the complete specification has not been filed at the time of first filing, which is usually the case, normally because you're not sure of what the claim is, then the complete specification must be filed within 12 months from the date of filing of the provisional specification. So if you're not sure that what you're filing for, then you can go for a provisional specification, and you will be getting a time of 12 months to file your complete specification. So within the time of 12 months, you can file a complete specification. This period, it can be extended by 3 to 6 months by making a request on the prescribed form, which is Form 5, along with the prescribed fees. So if you want more extension, you have to pay a fees, and you have to also ask for an extension of it. If the complete specification is not filed within the prescribed period, the application shall be treated as deemed to have been abandoned, and no further action would be taken by the patent office thereon. So if you are not yourself requesting for the application, for examination, for application, for any type of extension, then the patent office will think your application to be abandoned, and they will treat that the application is abandoned, and they will not give any heed to your request. Or because you have not requested, you have not given any further extension, so whatever application is given, it will be treated as an abandoned application. Now, after the specification is filed, then there will be a notification in the Patent Office Journal. After the application is filed with the required documents and fees, the date of application is allotted, and the application is published after 18 months in Patent Office Journal. The copy of the application and specification is made available to the public through Patent Office website, and the contents of the specification are kept confidential up to the date of publication. So whatever your application is, if you are filing an application, it is kept undisclosed, it is kept secret until it has been notified in the Patent Office Journal. Once it is notified in the Patent Office Journal, it is open to the public. It has become a public document. Now anybody can view that. Okay. Now you can go for a request for examination. Once it is notified in the Patent Office Journal,
you can further go for a request for examination. So now you can see that at every step you yourself are requesting. The patent office will not suo moto do anything to your application. It will not take any action on your application. At every step, you as a patentee will have to go for a request. You as an applicant, I will not use the word patentee, because unless and until you've been given a patent, you're not considered to be a patentee. So as an applicant, you have to request at every step for further action. So the applications are not examined till the request for examination is made. Requests for examination can be made by any person or the applicant within 48 months from date of application. And if no request is made within the prescribed time, the application is treated as deemed to have been withdrawn. So again, if you're not requesting for examination, what will happen? It will again be treated as if you have taken an extension, you have filed the specific complete specification, but you're not going for a request for examination, then again what will happen? Your application will be treated as withdrawn. Now, examination of patent application. You have filed a request for examination, and there is an examination of patent application. The examination of patent application is taken up in the patent office only after request for examination is received, and the applicant has to respond within 12 months of the first examination report. So your application is also examined, and there is a first examination report. The examiners have examined your application, and they have given a first examination report, FER. So after examination, what happens? Our FER comes, the first examination report, and that will be responded within 12 months. Within 12 months of the first examination report, you again have to give an examination for request. An application for request. So once you have given an application for request, again after the first examination report, then if the application is found to be in order, then patent is granted by allotting a serial number. Grant is then notified in the Patent Office Journal, available on its website, and after publication, patent specification and other documents relating thereto are made available to public. So the applicant receives a patent certificate giving details of the patentee, title of the invention, date of grant. The entry of the grant is also made in the Register of Patent. So once your examination, after the first examination report, FER comes, you are again giving an application, then the application is found to be okay. It is found in order. Then what happened? The Patent Office grants you a serial number, and that is notified in the Patent Office Journal that this particular individual or this particular company has been granted this patent, and now he has become the patentee. And the applicant receives a patent certificate giving details of the patentee, the title of the invention, the date of grant, and then what is the invention. That means very clearly the claim and everything is mentioned. And this entry of the grant is made in the Register of Patent. There is a Register of Patent where it is registered that this patent has been granted to whom. So, in the Register of Patent, aapka naam chad gaya. That means your name is now as a patentee there in the register. Now, even after you've been given a patent has been given to a company or to an individual, there are two very important steps which we have to remember. That is a pre-grant opposition and a post-grant opposition. Now, when I've used the word opposition, you can understand that when you have not been granted a patent, at that time also somebody can oppose your patent. And after you've been granted a patent, then also somebody can oppose. So how is the pre-grant opposition made? Any person, if he or she thinks that your patent or your invention is not worth, or you can say it is not novel, or there may be anything which you have infringed, then that person can file an opposition by way of representation to the controller any time after publication and before the grant against the grant of the patent. That is known as a pre-grant opposition. Before the grant is given, you know that it has been notified in the journal and somebody reads it in the public domain and finds that you have infringed or there is no novelty or there is something wrong in it, then can file an opposition before the grant of the patent. He must file evidence in support of his opposition and may seek hearing. After hearing the patent applicant and the opponent, controller may either reject the representation and grant the patent or accept the representation and refuse the grant of patent on the application. Now you see that during the pre-grant opposition, what happens? That if the opposition, the grant application, pre-grant application, opposition is correct and the controller finds that yes, this is correct, then he can, what he can do, he can not grant the patent to that person and
what he can do, he can stop the grant of the patent there itself because of the representation. But if he finds that this representation or this application is frivolous, then he can reject the opposition and grant a patent to the patentee, to the person. Now, as I told you, that there are two ways of opposition. First is pre-grant opposition, before the grant of the opposition, before the grant of the patent. And the second is the post-grant opposition. Even if you have given a patent, any interested person can give notice of an opposition on Form 7 to the controller within 12 months from the date of publication of the grant of patent. And this opposition is referred to an opposition board constituted by the controller. On receipt of this recommendation of the opposition board and after hearing patentee and the opponent, controller may either maintain, amend or revoke the patent. So after the grant of patent is given, the patent is granted to you, even then if somebody feels that any interested person, he can give a notice of an opposition on Form 7 to the controller and within 12 months from the date of publication of the grant of patent. And this opposition, if the controller finds that it is okay, or then either it can maintain or amend or revoke the patent. Maintain means the prior patent may be considered to be okay and you may be considered as a patentee and nothing wrong can be done because you are now the patentee. But if the controller thinks that yes, the application for amending or for revoking is correct, then can revoke or amend the application and may revoke or amend the patent, and now the patent may be taken back from you. It may be noted that the entire process from filing a patent application to the grant of the patent is complex and highly legal, not only in India but in other countries as well. And therefore, services of patent attorneys are invariably taken to process patent applications in the patent offices. So it is important here that either you can take the help of a patent attorney or a patent agent. In the patent offices, you will often find patent agents who are very well versed with the patent work and who can write good patents, who can draft patents, who can support you with the necessities of how to file a patent, where to file a patent, and how to write a patent, how to defend your patent. So you can take the help of patent attorneys who are well versed in IPR, intellectual property rights, and also patent agents who are there who have passed the patent agent examinations, which is a very high complex type of examination. And after completing that examination, people who are interested to become patent agents, they become patent agents and work in the area of intellectual property rights. So you can always take the help of these people for filing your application and also defending your application. Now, coming to winding up of this session. In this session, I hope that I have talked about the nitty-gritties of how to file a patent, where to file a patent, who can file a patent, and what is the procedure for filing a patent. So let me just sum up in some words. The creator of an intellectual property has many options to protect his creativity. The driving force behind the strategic decision to obtain a patent depends upon the commercial interest of the creator. Normally, the creator is prompted to seek patents where he intends to secure protection for the new technology to establish a startup industry. Implementation of the decision to file patent application involves planning of a strategy to address the issue, what to file and when. And thus, we have seen the procedure to file an application for obtaining a patent. So with that, I come to an end of this session. I hope you've enjoyed the session. If you have any queries, you can always mail me at suneetkashyap@ignou.ac.in. I'm your program coordinator and also the course coordinator, and I'll be very happy to take your queries and answer you back. With that, I come to an end of the session. Thank you very much. Namaskar.
জন্মেছি দেশে সার্থক জনম মাগো সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালো বেশে সার্থক জনম আমার জন্মেছি দেশে কোন দেশেতে জানি নে ফুল গন্ধে মন করে আকুল কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জোড়ালো আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জোড়ালো এই আলোতেই নয়ন রেখে মুদবো Good morning, good evening, dear learners. I am Dr. Shweta Tripathi from School of Engineering and Technology. I am Program Coordinator of Master of Science in Renewable and Energy and Environment. Today, I am here for the induction of the learners who have admitted in the July session of this program, that is, the learners who are in the first semester. So, I welcome you all to Indira Gandhi National Open University, particularly in School of Engineering and Technology, to the program MSc Renewable Energy and Environment. The program overview, I will give a brief program overview. This program is a multidisciplinary program
and it provides in-depth knowledge of all major renewable energy sources like solar energy, bioenergy, wind energy, geothermal energy, tidal energy. In nutshell, I will say that we will tell you, or you will be able to know about all the energy conversion processes that are available till date. Either they were in the conventional form or they are new to us. We will be discussing all the technologies and you will be able to know all the conversion processes, and you will know their applications for the new and renewable energy sources, or we have to conserve or we have to save the energy that we were wasting. So for that you need to do energy audit and energy conservation, that is energy management. So you are going to learn about all these concepts and all these technologies and all these techniques that are available with us. The focus of this course is to equip you all, that is the learners, with technologies, economics and policy involving energy systems and supply with renewable energy sources without affecting the environment. So this is all that we are going to learn in this particular programs. Basically, we have the subjects related to energy conversion, heat transfer, because without transfer of heat, energy conversion is not possible. You will be able to learn about the thermodynamics as well in some of our course. You are going to learn about energy management. You are going to learn about the economics that is involved with various energy projects, so that you can calculate the payback periods, etc., and can tell that whether this particular technology is useful or not. You are going to learn about the socio-economic impacts as well. You are going to learn about the economic and environmental impacts of the particular energy conversion process as well. You are going to learn energy auditing in detail, so that you will be able to do the energy audit, or you will be able to conduct the energy audit of any of the industry. On the basis of all these things, we have laid down certain objectives, and these objectives are to provide opportunity to the learners to deepen their knowledge of renewable energy and environment, and to understand the principles of energy conservation and energy conversion, and you will be able to know about the effect of energy conservation and conversion on the environment. Suppose we are going to develop a new fuel, or we are going to develop a biofuel for the transportation sector. So you must know that the energy conversion process that is involved in that particular biofuel production and its utilization, what is its effect on the environment. If we are saying that this is the solution of our problem, generally we have the problem of energy security and environmental degradation. So if we get a secure source of energy, it should not degrade our environment as well. So you should know the effect of that particular technique or technology on the environment as well. Our next objective is to expand the capacities of learners on theoretical and practical aspects of renewable energy sources and how we are going to develop them. That is their sustainable development, whether they will be socially viable, locally viable, or economically viable or not. Suppose if you are going to develop solar energy sector in a particular area where sunlight is not available, so that thing is technically not viable. Suppose I am going to produce biofuel, but that particular crop will not sustain in the area. If you can say that the production of that particular crop is not possible in that field, so that is not a viable source locally. So likewise, that we have to compare the sources, the climatic condition, the geographic condition of a particular place, that whether these things are feasible or not, and according to that we will select the technology or the new and renewable energy resource for that particular area or that particular geographic location.
So, this is what we expect from our learners to do, because the coming era is the era of new and renewable energy sources. So, there lot of manpower is needed who will be able to install, who will be able to develop new and renewable energy concepts, able to develop new renewable energy conversion processes, and they should be able to manage the energy that is already available with us. Because if we are saving the energy, if we are utilizing the energy in efficient manner, we are not going to waste that energy. So energy saved is much better than the energy that we are generating, because when we are generating there are certain losses. It is not that 100% of energy conversion is achievable. So some of the energy is lost during production itself, some of it is lost during the transmission, some of it is lost in the distribution. So if we are going to save energy, it is much better than generating the new energy. So in this course, you have to learn all the techniques that may help in conversion of energy from one form to another. The method should be any one. There are many energy conversion processes that are direct energy conversion process, and there are many energy conversion processes which will take multi-stage energy conversion. Like if we generate electricity from the coal, what happens? First, chemical energy of coal is converted to the heat energy. Then this heat energy that we have taken or we have extracted from the coal is utilized to make steam or to produce steam from the water. So again there is energy conversion. Then that steam is utilized in the conversion. Steam is utilized in the turbine. So again there to produce some work. So so again mechanical energy is involved there. Then that particular mechanical energy that is available due to the rotary motion of the turbine is then again converted to the electrical energy. So lot of energy conversion stages are there. Energy is converted for in various forms and is going through various stages. Then what happens? In every stage there is some loss. So more will if the number of stages are more, the efficiency of the desired energy that we are getting is less. So we can say that multi-stage conversion processes are less efficient than the direct energy conversion process. So you have to understand all these concepts. But if the direct energy conversion is not possible or the yield is very low, then what we have to do? We have to go through the certain stages. So I am not saying that you have to not develop the energy forms, or you do not convert the energy if the stages are more. You have to do that, but you have to minimize the number of stages so that you can get an efficient process. So this is our objective that we are going to fulfill in this program. If we talk about the salient features of this program, the medium of instruction for this program will be English. Duration of this program is minimum 2 years and maximum duration is 4 years. This is semester based exam. There will be this is a semester based program and the examination will be semester wise. So there will be 4 semesters in 2 years, and there will be an exit option also at the end of the first year. So you can say that every semester is of 16 credits and our second semester is of 18 credits. So after earning 34 credits, you have an exit option. You all will get a PG diploma in renewable energy and environment after completion of first year. In later case, if you want to enroll in this program again after due course of time, after exiting the program after first year, you have to take a fresh admission in MSc program and all your credits will be transferred. That is, the credits of PG diploma in renewable energy and environment will be transferred as per the IGNOU norms.
some charges will be there, and then you can appear for the examination of third semester or second year eventually. So there are 4 semesters. So if we talk about the first semester, there are 4 subjects in first semester. MRW 001, energy conversion, MRW 00T, heat transfer, MST 001, foundation in mathematics and statistics, and MED 003, energy and environment. All the courses are of 4 credits, and for every credit we have 1 block. So 4 number of blocks that are available for all the courses are 4. So you have to go through all the 4 blocks for the examination, and the questions will be asked from all the 4 blocks. So in energy conversion, heat transfer, foundation in mathematics and statistics, and MET 003, that is energy and environment, you have to go through 4 blocks. All these 4 blocks, the questions will be asked from all the 4 blocks, and we will try to cover whole of the syllabus in our term end examination paper. Term end examination are most likely to be scheduled in December itself, and as you all have taken admission, you all have received the soft copy of the material in this program as it is launched recently. So we are providing only soft material to our learners. So you all might have received the soft copies of our study material. It is believed in our distance education, or it is the policy of IGNOU that that we think that, in our opinion, teacher is inbuilt in our self-learning material. They are written in a manner that when you will go through each units, you will find that the teacher is with you. So the thing is that you have to learn it on your own. We have counseling sessions for all of our courses, and in that counseling session we will try to cover all the blocks. But it is not that we are going to teach you each and everything there. If you have doubt, you may ask us everything in that particular counseling session. Otherwise, whatever are the important topics, or what we think that this could not be understood on your own, that we will be discussing in the counseling classes. In first counseling class, we will give an overview of all the blocks. In second counseling, we will conduct the counselings block wise, and we will give an overview of all the blocks there, and then we will discuss the topics that are really tough and you cannot understand it on your own, and we will try to solve all your queries there. So this was all about the semester 1. Then comes the Sem 2. In semester 2, again there are 4 courses. First is MRW 003, that is Renewable Energy System. Then MRW 004, Energy Management. Then MEV 003, Energy Environment Law and Management. And 1 project course is there, that is MRWP 001. All the courses except project are of 4 credits. So again you are going to get 4 blocks. 1 block means the units that are of similar type, we compile them in a single block. So that is the story of block, and in 1 block there could be 3 to 4 units. So this is how you have to study 3 courses, theory courses, and next comes the industrial training or minor project. In this course, MRWP 001, you either can go for the industrial training or minor project. As many of our learners are already employed, so we felt that industrial training is not very important for them. The learners who are fresh and have no industrial exposure, or they are working in education sector, etc., we want them to do an industrial training in the field of energy conversion process. It could be any power distribution sector, any sector where energy conversion takes place, that is any power plant. You can go to a hydel power plant, you can go to thermal power plant. If there is power generation from the solar or wind or biomass, you can go for training through them as well. Or if you
don't get any industry, you can prepare a minor project. For minor project, you have to search a local guide who will be guiding you there or supervising your work there. The qualification of the local supervisor should be masters with 2 years experience or a PhD in that particular field. They could be our academic counselor as well, but it is not a compulsory requirement. So you can have a guide on your own locally, and then one guide or one supervisor will be allotted to you from the university headquarters, and that is from School of Engineering and Technology preferably, and the supervisor will be allotted to you from the headquarters on the basis of your area that you have subjected for the project. So you have to submit a brief synopsis along with the pro forma that will be provided to you and a brief biodata of your local supervisor. Then on the basis of that, the supervisor of IGNOU will approve or disapprove the synopsis and the supervisor that you have selected as well. And on the basis of that, you have to prepare a project report and you have to submit it. On the basis of that report, we will evaluate you. In case of industrial training, you have to submit a certificate and a brief report that what are the processes that you have learned. We expect that in 4 weeks, you will learn at least 2 to 3 processes that you have already studied in your theory courses. So this was all about the first year. After it, you will get an exit option also and a PG diploma in renewable energy and environment also. Then comes the second year or third semester. In third semester, again we have 4 subjects, and these are MRW 005, that is solar energy and its application, bioenergy conversion and its utilization, energy economics and planning, and then an elective subject will be there. So basically these courses are again of 4 credits, and for this elective subject from energy, the subject is nanoscience in energy and environment. Apart from it, some of the subjects from the environment, that is global climate change, etc. are there. Some subjects from the computer applications are also there for as an elective. Artificial intelligence, soft computing, etc. are there. So any elective, depending upon your choice, you can select from here. Then comes the fourth semester. Here you have only 2 subjects. First subject is an elective, that is again from energy, it is energy storage, and from other discipline you will be having one subject from computer application, and some subjects from environmental science will be there. So you have to choose accordingly. And apart from it, there will be a major project, and major project will be of 12 credit here. And in the procedure for the major project is same that we have followed in the minor project, but in the evaluation, we will evaluate you by your report and by the viva as well. So the weightage of report will be 70% and weightage of viva will be 30% here. And the passing mark is 40% in viva and in project both. Then comes about the assignment. As you all have received the assignment, so you have to do the assignment that is available in MRW EE 2022, that is 2022. For July and January session, the assignment is same. You have to go for the semester 1 assignment that is available in our IGNOU website. It has been sent to you by email as well. It is shared in our WhatsApp group and Telegram group as well. So you have to download this assignment of all the 4 subjects that is available. Don't confuse by January 22 or anything else. Whatever assignment is given for January 22, the same assignment is for the July 22 as well. Read all the instructions that are given in the
assignment booklet carefully and try to identify the questions from the material that has given to you. All the questions are from the self-learning material only. Some questions are there that you will not get. If you will search for it, you will not get. But if you will go through the syllabus or go through the material thoroughly, you will be able to answer those questions. So try to answer all the questions. The assignment should be handwritten and you have to submit it to your nearest regional center within given date. So you have to submit it to your regional center before November 15th. Try to stick to the word limit, whatever is provided in the assignment, if it is provided there. It is not that if you are writing very long, you will fetch good marks. Just write it point to point. Try to cover all the points that are asked in the question. Supplement it with various examples, illustration, and real life examples. We expect that you are not going to repeat the examples that are quoted in your self-learning material. Try to write it in your own words. Don't copy from the material directly. Be precise, concise, and systematic, and try to write the relevant thing. And in no case submit it typed. Try to submit it in your own handwriting. If you will submit the typed assignment, they will not be considered for the marking and will be returned back to you. Then comes the examination. Examination forms are all already available in the website. So go to our IGNOU website. Here you will see that online submission of exam form for December 22 term and examination is already there. So click it. After clicking it, you will go to the examination form. So from here you can fill the examination form. Try to fill it because the last date that is given now is 30th October. After 30th October, 200 rupees late fees will be there per course. So try to submit this examination form by 31st October. Suppose you have not submitted your assignment before filling up this examination form. So try to submit the examination form first and then submit the assignments, that too by November 15th, which is the last date that is given. If we talk about the evaluation methodology of this particular course, so the passing mark for all the courses is 40%. You have to pass in both term and examination and assignment separately. The weightage of term and examination is 30% and the weightage of term and examination is 70% and the weightage of assignment is 30%. So try to submit it before November 15th. Assignments are already available with you and we will conduct our counseling session very soon and will share all the details with all of you. We will try to take counseling session from Gyan Darshan and from interactive radio counseling as well, that is Gyandhara, and we will share the schedule with you beforehand. I think that you will enjoy the learning. I wish you all the very best and a happy learning during the whole program of Master of Science in Renewable Energy and Environment. Thank you very much.